So we start with a new chapter today, which is your plant growth and development. Now, what is the meaning of growth? सबसे पहले, how do you define growth? Growth is actually it is an irreversible, or you can also say it is a permanent increase in the size of the entire plant. मतलब how do we define growth? This is how we define it. So it is an irreversible, permanent increase in size of the entire plant, or it could be just an increase in the organ or a tissue or even a single cell. So the increase in size of any of these parts, that is known as growth. ठीक है? Also, growth is always accompanied by metabolism. Obviously, so there are so many metabolic reactions which are taking place, be it a plant or be it an animal, or so many metabolic reactions are taking place, and we have just studied all of those metabolic processes. So, growth is always and always accompanied by those metabolic processes. Okay. And when you say that growth in plants, what is the type of growth in plants? So, the type of growth in plants is actually indeterminate. Okay. So, what is the meaning of indeterminate growth? Indeterminate growth means that the type of growth which is present in plants, that is actually an open form of growth. Now, what is the meaning of open form of growth? Open form of growth means that is the plants they keep on growing as long as they live. ठीक है, जितने दिन तक वो रहेंगे they will keep on growing. ऐसा हमारे साथ नहीं है. हमारे में क्या होता है, we grow till a particular age. Okay, and after that we stop growing. Okay, but in the plants the case is actually reverse. As long as the plants are alive, they keep on actually growing. Okay, and there are some cells which are present in a plant which continuously divide, which never stop dividing, and we have already studied those kind of cells. Those kind of cells, they are known as the meristematic cells. Okay, so meristematic cells are the cells which are present in a plant, which are always present in a state of division state. Okay, they are always dividing. So this kind of growth in plants, that is known as the open form of growth, and इसको हम we call it a specific, we give it a specific term which is known as the indeterminate growth. Okay, now this growth can also be measured by several factors. First is the increase in the protoplasmic content. So if there is an say even a slight increase in the content of the protoplasm, so we say that the cell or the plant or anything has grown. Or there could be increase in the fresh weight, or there could be increase in the dry weight of the plant, or even in the number of cells, or simply you can say if there's an even increase in the length or the size, so then we can say that the growth has actually taken place. Okay, now if we talk about the various phases of growth, so what are the various phases? The first phase is known as the meristematic phase. Okay, so the first phase is known as the meristematic phase, and in this particular phase, cell division, it is also known as the cell division phase. And जो इस region में या जो इस area में cells present होते हैं, they are always continuously dividing. Okay, you had seen a structure of root when we were doing the morphology of flowering plants. तो morphology of flowering plants वाले chapter में we studied the structure of a root. ठीक है, यहाँ पे there's a root cap. ठीक है, and what happens here, यहाँ पे there are so many cells which are present here. तो ये जो cells होते हैं, what do we call these cells? These cells, they are known as the meristematic cells, or you can simply call it as the meristematic zone. ठीक है, meristematic zone के ऊपर क्या present होता है? There is this zone of elongation, and सबसे टॉप पे क्या होता है आपके? This is your zone of maturation. So this is your zone of maturation. We have already studied this particular structure of root. So phases of growth में the first phase which comes up is your meristematic phase, or you can also call it as the cell division phase. Okay, second phase is the elongation phase. Elongation phase में actually क्या होता है? Elongation phase means कि कोई पार्ट elongate नहीं होता है generally.
what has been observed in plants कि जो plants होते हैं plants के अंदर what particular structure enlarges or elongates, it is generally the vacuole. It is generally the vacuole of the plant which enlarges. Okay, so the vacuole of the plant is generally the structure which enlarges in this elongation phase. Okay, the third stage is the differentiation or the maturation phase. The differentiation or the maturation phase. ठीक है, डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन फेज मतलब इसको हम क्लियरली यहाँ से भी देख सकते हैं. सो द टिप रीजन इज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जहाँ पे सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स और द जितने भी कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है दे ऑल वुड बी प्रेजेंट हियर. एंड जस्ट अबव दिस मेरिस्टेमेटिक जोन देयर इज दिस जोन ऑफ elongation. एंड वी हैव जस्ट सीन elongation phase में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में they are actually going to enlarge. Okay, and then just above the zone of elongation there is a maturation zone, and in that maturation zone means already divided cells or the elongated cells, they differentiate. Okay, differentiate means कि they differentiate in such a manner that they have to perform a special function. ठीक है, either they can form the cells of the parenchyma, or if they could form the cells of the collenchyma, sclerenchyma, anything. So they divide in such a manner that they perform a special function. Okay, now इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट इसमें चीज आता है, टर्म आता है, दैट इज योर ग्रोथ rate. Okay, so now what is, how do we measure growth or how do you define this growth rate? So growth rate क्या होता है? It is actually simple terms में it is growth per unit time. So amount of growth which has actually taken place, amount of growth which has actually taken place per unit time, that is known as the growth rate. Okay, now अब जो growth rate होती है, how do we define that growth rate? It is of two types actually. So it is of two types. What is the first type? The first type is the arithmetic growth rate. Arithmetic growth rate. Okay, so now what happens in this arithmetic growth rate? इसमें arithmetic growth rate में देखो क्या होता है. सबसे पहले एक इसमें suppose there is a cell. ठीक है, suppose there is a cell and this cell सबसे पहले क्या होगा, it undergoes mitosis. ठीक है, तो माइटोसिस करेगा तो we already know कि दो cells बनेंगे. So these are the two cells which are formed. ठीक है, after the mitotic division. So after mitosis what is going to happen? Out of these two cells, one cell it continues to divide and the other gets differentiated. मतलब suppose ये जो दो cells बने हैं इसमें से this one is the cell which gets differentiated. Okay, so this is the cell which is getting suppose differentiated. ठीक है, and the other cell it keeps on dividing. Okay, so जब ये divide करेगा तो what is going to happen? Again it is going to form two cells. ठीक है, ये वाला जो सेल था इट वाज ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड एंड जब इस सेल ने डिवाइड किया तो इट फॉर्म्ड टू सेल्स एंड अगेन द सेम थिंग, जो टू सेल्स बनेंगे उसमें से वन सेल विल गेट डिफरेंशिएटेड एंड द अदर विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन डिवाइडिंग. ठीक है, सो नाउ दिस बिकेम डिफरेंशिएटेड. ठीक है, एंड दिस सेल केप्ट ऑन डिवाइडिंग. अगेन द सेम थिंग. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब ये तीन सेल जो बने हैं अब इसमें क्या होगा, चलो इसको नंबर दे देते हैं. सपोज दिस इज नंबर 1, सो दिस इज 1, दिस इज 2. ठीक है, तो अब क्या होगा, द सेल्स अगेन कीप ऑन डिवाइडिंग. ये डिफरेंशिएट हो गया, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, दिस वन इज ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड. ठीक है, एंड इसको ये एक जो नया डिफरेंशिएटेड सेल है, सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड सेल. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इट एक्चुअली कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन. ठीक है, so this type of growth that is known as the arithmetic growth rate. ठीक है, so आप इसको सिंपल बोल सकते हैं, every time the size increases by addition of 1.
So therefore every time the size increases by एडिशन ऑफ वन. ठीक है. अच्छा, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन भी दी गई है विच इज नोन एज एल टी इज इक्वल टू L naught or L0, whatever you want to call it, plus RT. ठीक है. So this is the equation which has been given in the to explain the arithmetic growth rate. Now what is this LT? It is the length at time t. So LT is the length at time t. And what is this L0? It is the length at the beginning. ठीक है. And R is the growth rate. What is R? R is actually the growth rate and T is obviously the time. ठीक है. So this is the first type of growth rate which is the arithmetic growth rate. Arithmetic growth rate simply means कि there's a cell, now this undergoes mitosis. तो mitosis करेगा तो it will form two cells, and out of those two cells one cell keeps on dividing and the other cell gets differentiated. So पहले it was one cell. So as I've written here, every time the size increases by addition of one. ठीक है. So पहले it was one cell, then it became two cells, again it increased by one, then it became three cells, again it increased by one, and then it became four cells, again it increased by one. ठीक है. So this number of cells they keep on increasing by addition of one. ठीक है. So this is the first type of growth rate which is the arithmetic growth rate. And इसका अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो कर्व इसका कैसा आएगा? It will be a straight line or you can say the linear graph. ठीक है. For example, इसका अगर आप कर्व ड्रॉ करते हो तो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है. लीनियर आएगा. सो वाई एक्सिस पे आप इसमें क्या डालोगे? इट विल बी हाइट और यू कैन से लेंथ, वट एवर यू वॉन्ट टू से, हाइट और टाइम. ठीक है. सो द ग्राफ विल बी एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है. नाउ जस्ट ये समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, द सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ रेट. First one is the arithmetic growth rate and the second type of growth rate is actually the geometric growth rate. Done? So the next type of growth rate is actually the geometric growth rate. Geometric growth rate. Okay. So now what happens in this geometric growth rate? इसमें again suppose if there's a cell, ठीक है, so this cell undergoes mitosis. ठीक है. तो जब ये सेल माइटोसिस करेगा तो इट विल फॉर्म हाउ मेनी सेल्स? इट इज गोइंग टू फॉर्म टू सेल्स. ओके. सो अब ये जो दो सेल्स है नाउ दे विल अंडरगो माइटोसिस. ठीक है. तो ये दो सेल्स बनाएगा, ये दो सेल्स बनाएगा. सो टोटल हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर? 1 2 3 एंड 4. ठीक है. नाउ अगेन दीज फोर सेल्स अंडरगो माइटोसिस. तो ये कितने बनाएंगे? दे विल फॉर्म 8 cells. And when these 8 cells undergo mitosis, how many cells they are going to form? They are going to form 16, and then 16 से it will be 32. So ठीक है. So this is the manner in which the number of cells they keep on increasing. So आप इसमें बोल सकते हैं कि both the cells they divide. Okay, both the cells they divide. So this particular kind of growth rate or is known as the geometric growth rate. ठीक है. इसका कर्व कैसा बनता है? इसका कर्व बनता है लाइक दिस. ठीक है. इसमें यहाँ पे आप डालोगे वाई एक्सिस पे देयर विल बी ग्रोथ,
ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज टाइम, ठीक है। तो इसका कर्व कैसा बन के आएगा, ठीक है, लाइक दिस। आप या सॉरी इसको या फिर ऐसे नहीं बोलेंगे, इसका बनेगा काइंड ऑफ सिग्मोइडल कर्व बनेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सो इट विल बी सिग्मोइडल, काइंड ऑफ सिग्मोइडल कर्व, सो यू कैन से इट एज द sigmoid ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में क्या होगा, सबसे पहले तो इनिशियली क्या होगा, द सेल एक्चुअली प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द डिवाइडिंग, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है, this particular phase, what is this phase, this is one phase, then there is this phase, and then there is this phase, so there are total three phases, ठीक है। तो ये phases कैसे बोलेंगे, so this ये जहाँ पे सेल एक्चुअली खुद को प्रिपेयर करता है फॉर द पर्पज ऑफ डिवाइडिंग, दिस इज नोन एज योर लैग फेज, ठीक है। सो दिस फेज इज नोन एज द लैग फेज, एंड जब कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, दिस फेज इज नोन एज द लॉग फेज, ठीक है, और द एक्सपोनेंशियल फेज, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। एंड ये वाला जो फेज होता है, इट इज नोन एज द प्लेट्यू फेज व्हेन देयर इज स्टेडी ग्रोथ, मतलब ग्रोथ स्टैटिक हो जाती है, ठीक है। सो इट इज नोन एज द स्टेडी ग्रोथ, ठीक है। सो दिस इज द सिग्मोइडल कर्व, एंड दिस इज हाउ the geometric growth curve is actually depicted. Now, what is the equation to explain this geometric growth rate? The equation is actually Wt is equal to W naught into e raised to the power RT. So this is the equation which is given for the geometric growth rate. And इसमें what is W naught? It is the size at the beginning or size at the initial time. ठीक है? So W naught is the size at the initial time. Wt is equal to the size at time t. ठीक है? And what is this R? R is growth rate. What is E? E is actually your base of a natural log. So E is base of natural log. ठीक है? And then T is obviously your time, that is understood. So this is how the geometric growth rate is actually depicted. ठीक है? अच्छा, now if I ask you that you have to mention the various conditions for growth and differentiation. What are the various conditions for growth and differentiation? ठीक है, what are the various conditions? You already know. सबसे पहले जो सेल है, प्लांट है, उसको क्या चाहिए? फर्स्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए? दैट इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर प्लांट को एटीपी प्रोड्यूस करना है, सो एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस aerobic respiration, ठीक है। So this is the first condition. Second condition is water is required. और water किस लिए required होता है? Water is required to provide the turgidity, ठीक है। मतलब turgidity कैसे? अगर प्लांट के अंदर water enter करेगा तो vacuole और यह जो प्लांट की सेल वॉल है, just being turgid, so it wouldn't allow the collapsing of the cell, ठीक है, and kind of helps in maintaining a rigidity and turgidity in the plant. Okay, so you can say it helps in providing turgidity. Okay, then your third condition is your nutrients or the minerals. Nutrients or the minerals. So this is the third condition. ठीक है, now nutrients can be
Both it could be micronutrients or it could be macronutrients. ठीक है, and we have already studied what are micronutrients and macronutrients in the mineral nutrition chapter. CHO, there are nine: CHO, NPK, calcium, magnesium, sulfur. They are the macronutrients, and the rest, all the elements, they are the micronutrients. And this total micronutrients and macronutrients, their total number is actually 70. Okay. Third is, so the next condition is your optimum temperature. Obviously, there has to be an optimum temperature depending on the plant. Now we already know जो seed, जैसे for example C3 plants होते हैं, C3 plants they require lesser temperature as compared to the C4 plants. So the optimum temperature actually varies or depends from plant to plant. Okay. Next is your plant growth hormones. Plant growth hormones, or you can also call them as PGRs, which जो इस chapter में obviously जो main चीज है, ठीक है, that is your plant growth hormones. And the last is obviously your light. And light किसके लिए चाहिए? Obviously for the purpose of photosynthesis. Okay, so light is required for the purpose of photosynthesis. Okay, so these are the main conditions which are required by a plant for the purpose of growth and differentiation. Okay. अच्छा, इसमें आपके टर्म्स आती है तीन: डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. हु इज गोइंग टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. Whose mic is on? बताओ, who's going to tell me the difference between the three: differentiation, de-differentiation and re-differentiation? बताओ. बोलो जिया. For example, example. मतलब डिफरेंशिएशन का ऐसे कुछ एग्जांपल बता सकती हो? हाँ हाँ, ऐसा करके मतलब कुछ भी, कोई जैसे किसी स्पेशल पार्ट में वो डिफरेंशिएट कर जाता है, ऐसे कुछ भी एग्जांपल. सपोज कोई प्लांट पार्ट है, गॉट डिफरेंशिएटेड to perform to produce parenchyma. Suppose parenchyma is a kind of special connective tissue, is a special kind of meristematic tissue. तो उसमें क्या होगा? parenchyma का हमको पता है, parenchyma का function that is completely different, sclerenchyma that is completely different. So कोई भी meristematic cell when it becomes differentiated to perform a specialized function, that is your differentiation. Okay, now what is de-differentiation? बोलो. हम्म. तो नहीं हो पा रहा था मैं क्या मतलब है? GIZ, राइट? हाँ बोलो. एग्जैक्टली. सो जब डिफरेंशिएटेड पार्ट के पास फिर से डिवाइड करने की एबिलिटी आ जाती है, सो दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. इसीलिए वी आर कॉलिंग इट एज डी डिफरेंशिएशन बिकॉज दैट पर्टिकुलर पार्ट हैज ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, but somehow that part regained the capacity to divide again. Okay, so that is known as de-differentiation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे de-differentiation का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, डिफरेंशिएशन का तो आप ले सकते हो इसमें एग्जाम्पल, जैसे कोई भी पैरेनकाइमा या कोई भी स्पेशल टाइप का टिश्यू बन गया, ठीक है, सपोज इट बिकेम पैरेनकाइमा. ठीक है, डी डिफरेंशिएशन में आप क्या ले सकते हो? जैसे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एनाटॉमी चैप्टर. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, तो जो डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा है, दी ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा, तो उसके सेल्स क्या होते हैं? दे बिकम मेरिस्टेमेटिक
again, ठीक है. And after de-differentiation it forms the secondary phloem and secondary xylem. So इसमें क्या होता है, जब आपका parenchyma जो है it changes into secondary xylem and secondary phloem. ठीक है, ये कब होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, अगर स्ट्राउस का सेकेंडरी ग्रोथ का जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर याद है तो वी सी कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनते हैं. सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे बनते हैं कि जो ऑलरेडी जो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं, इफ दे समहाउ अगेन रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, so that becomes de-differentiation, and that could be seen in the during the secondary growth of the dicot plants. For example, जिसमें जो parenchyma है, which is already a differentiated tissue, so the cells of the parenchyma they again gain the capacity to divide and they form the secondary xylem and the secondary phloem. So this is an example of de-differentiation. Now, can you tell me what is redifferentiation? हाँ बोलो. हाँ, exactly like this. So this is redifferentiation. जैसे parenchymatous cells they become specialized and they come out of the cycle. मतलब आप बोल सकते हो उसको redifferentiation, मतलब कि differentiation में जब एक बार फिर से वो divide करेगा तो it becomes de-differentiation. ठीक है, redifferentiation में मतलब क्या होगा, जब उसके पास फिर से completely डिवाइड करने की एबिलिटी आ जाएगी, तो मतलब आप बोल सकते हो उसको एक काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक अ मेरिस्टेमेटिक सेल. तो उस टाइम पे फिर वो कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू इट कैन फॉर्म. दैट टाइम दैट इज नोन एज द रीडिफरेंशिएशन. ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन. ओके. Okay, so this is you are already aware of the differences between the three terms. That is your differentiation, de-differentiation, and redifferentiation. Okay. So I'm not going to make you write down the definitions. You can already do that. ठीक है, इसमें जो आपका एक टर्म आता है, इसमें वो आता है आपका प्लास्टिसिटी. एक इसमें आपका टर्म आता है which is known as plasticity. Now, what is the meaning of plasticity? Plasticity is actually मतलब एक this is a phenomenon in plants. So plants क्या करते हैं? The plants they actually follow different pathways in response to different environmental conditions or the phases of life. So the plants they follow different pathways in response to environment, in response to environment or the phases of life to form different structures. Okay, this is known as, what is it known as? This is known as plasticity. For example, plasticity का मतलब example जैसे क्या होगा, suppose there are some plants like coriander, larkspur और buttercup जिसको हम ranunculus भी बोलते हैं. So इनके अंदर क्या होता है, in these such kind of plants, these plants they actually show heterophily. ठीक है, they show heterophily. Heterophily means they have different लीव्स, मतलब कुछ साइज का लीव्स का साइज छोटा होता है एंड कुछ का बड़ा होता है. सो दे शो हेट्रोफिली. एंड मतलब इसमें व्हाट हैपेंस, जो लीव्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट, जो यंग प्लांट होता है, द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट दैट इज डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट्स. मतलब जो जुवेनाइल प्लांट्स होते हैं, जो यंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो लीव्स होती है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट from that of the adult plant. Okay, so this is basically you can say a response or of a plant to adapt themselves according to the different environmental conditions. So basically it means कि जो juvenile plant होता है उनके अंदर जो leaves का size और जो size होता है that is different. ठीक है,
and when it becomes mature, and when it becomes mature to deal with the harsh environmental conditions, so uske andar again the size of the leaves it actually changes. ठीक है, so this is a phenomenon which is known as plasticity. Plasticity simply means कि जो plants होते हैं different environmental conditions को deal करने के लिए different different responses के according adapt करते हैं. ठीक है, so this phenomenon or this is known as plasticity, and to adapt according to those environmental conditions they develop or they form different kind of structures. Okay, so this is known as plasticity. I can write down the example here. In plants like coriander, larkspur, they show heterophyly. So example, in plants like coriander, larkspur, buttercup, इनमें क्या होता है, इन प्लांट्स, इन दीज प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट दे आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट. ठीक है, दे शो हेट्रोफिली and the leaves of juvenile plant, they are different from that of the adult or the mature plant. ठीक है, so this is how you define plasticity and this is an example of plasticity. Okay, so this was your basic general chapter जो आपके इस चैप्टर के बिगिनिंग में स्टार्टिंग में दिया हुआ था. नाउ योर एक्चुअल टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट्स which जो आपको एक्चुअल में अच्छे से करना है, which is your plant growth regulator. So this plant growth and development chapter is all about the plant growth regulators. Okay, now just quickly take a screenshot and we start with the plant growth regulators. Done? इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें यू ओनली एंड ओनली हैव टू लर्न एंड बहुत इजी चैप्टर है. इसमें देयर इज नॉट कुछ भी इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जैसा नहीं है. So next is your plant growth regulators. या फिर जिनको हम सिंपली पीजीआरस भी बोलते हैं. ठीक है, PGRs means the plant growth regulators. ठीक है, so these plant growth regulators they are also known as फाइटो हॉर्मोन्स. जैसे हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं उसी तरह प्लांट्स के अंदर दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर देयर जिनको हम प्लांट फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं. ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन दीज फाइटो हॉर्मोन्स? दे आर सिंपल कंपाउंड्स. So they are simple compounds, small sized, and the site of production and site of mechanism and the site of production and site of mechanism, it can be either different or it can be same. ठीक है, सिंपली जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे एनिमल्स के अंदर देयर आर हॉर्मोन्स, इसी तरह प्लांट्स में देयर आर दीज फाइटो हॉर्मोन्स. ठीक है, अच्छा जो टू ईज अप जो पीजीआर्स को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में. सो द पीजीआर्स विच प्रमोट द ग्रोथ, सो द पीजीआर्स विच promote growth, what are they known as? So the PGRs which promote growth, they are known as promoters, and the PGRs which actually inhibit
the growth, they are known as inhibitors. Okay, so जो growth को promote करेंगे, simple सी चीज है, they will be promoters, and जो inhibit करेंगे, they will be inhibitors. ठीक है, so promoters की category में कौन कौन आता है, कौन कौन से phytohormones आते हैं? So the promoters, they actually include auxins, cytokinin, and the gibberellins. ठीक है, these are mainly the one. ठीक है, inhibitors में क्या आता है? There's your abscisic acid. ठीक है, abscisic acid being acts as the inhibitor. अच्छा, इसके अलावा एक और plant growth hormone है which is your ethylene, and जो ethylene होता है that occurs in both, it acts as both. ethylene दोनों में present होता है, that is it can act as promoter as well as your inhibitor. ठीक है, now firstly if we start talking about their composition of these PGRs. Composition. So there are total 5 PGRs which you have to study. First is auxin, cytokinin, gibberellins, abscisic acid, and ethylene. So these are total 5 PGRs which you have to study. Okay. So now we'll talk about the basic composition of all the PGRs. So there could be indole compounds. ठीक है, indole एक chemical structure होता है. ठीक है, so there could be indole कंपाउंड्स. ठीक है, सो व्हाट आर दीज इंडोल कंपाउंड्स? इसमें एग्जांपल आएगा आपका आई ए ए. ठीक है, इनके एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं. व्हाट डज दिस आई ए स्टैंड फॉर? अच्छा, आई ए को सबसे पहले हम बोलते हैं दीज आर दी अदर नेम फॉर दी ऑक्सिन. ओके, एंड दिस आई ए स्टैंड्स फॉर इंडोल acetic acid. Okay, because इसमें जो main structure होता है that is the indole structure.